स्टूडेंट्स, बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ द नॉर्मल टू कॉनिक। बेटा इफ द नॉर्मल एट द एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द कॉनिक L upon R equal to 1 minus E cos theta meet the curve again in Q. Then FQ. What is F? F is pole, means focus. ठीक है बेटा, बिकॉज इस कॉनिक में हम बेटा फोकस को क्या कंसीडर कर रहे हैं? पोल, सॉरी पोल को एज कंसीडर फोकस। सो फर्स्ट पोलर एक्सिस, ओके, दिस वन इज पोल, दिस वन इज ए फोकस बेटा F। ए लेटेस्ट रेक्टम हो गया बेटा, दिस वन इज L π/2 टेंजेंट एंड नॉर्मल, वी ड्रॉ नॉर्मल। ए नॉर्मल मीट किस पॉइंट पे मीट कर रहा है बेटा? Q। सो बेटा लेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बेटा अपने की प्रूव करना है FQ इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू ई स्केयर प्लस ई दी पावर 4 अपॉन 1 प्लस ई स्केयर माइनस ई दी पावर 4 इंटू L। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ कॉनिक ही है बेटा, इक्वेशन ऑफ कॉनिक L upon R equal to 1 minus E cos theta, consider 1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट थीटा 1, बेटा मेरे लास्ट वीडियो में मैंने प्रूव किया था इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आई थी? L E साइन थीटा 1 अपॉन R इंटू 1 माइनस E कोस थीटा 1 इक्वल टू E साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस थीटा 1। ओके बेटा, normal passing through this point, okay, theta 1 point, then this one is π/2। so take theta 1 किस चेंज हो गया बेटा? π/2, क्योंकि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दिस वन एट theta 1 अपने कितने ड्रॉ करनी है बेटा? एट द एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। सो लेटेस्ट एंड की है बेटा L π/2, थीटा कितना बेटा? थीटा 1 कितना हो गया? π/2। सो किया गया L E साइन π/2 अपॉन R 1 माइनस E कोस π/2 E साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस π/2। ओके बेटा, कोस π/2 0, साइन π/2 1। सो इक्वेशन L E अपॉन R इक्वल टू E साइन थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, π/2 माइनस थीटा, L E upon R equal to E sin theta plus cos theta। So we find this equation beta L E upon R equal to E sin theta plus cos theta। We find beta करना है ऐसे बेटा, देखियो this one focus, draw a tangent normal, meet the point Q। ओके, बी फाइंड एफ क्यू, अपने यहाँ डिस्टेंस फाइंड करना है एफ क्यू। सो बी फाइंड आर, आर फाइंड करने के लिए आप क्या एलिमिनेट करेंगे बेटा? थीटा। सो वी एलिमिनेट थीटा टू फाइंड लेंथ एफ क्यू। सो बेटा एल ई अपॉन आर माइनस कोस थीटा इक्वल टू ई साइन थीटा। ओके बेटा, एल ई अपॉन आर माइनस कोस थीटा इक्वल टू ई साइन थीटा। सो एल ई माइनस आर कोस थीटा इक्वल टू ई आर साइन थीटा, स्केयरिंग बोथ साइड। रीजन बेटा वी फाइंड कोस थीटा, सो पुट स्केयरिंग करेंगे बेटा, क्या लेगा? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा निकालने के लिए बेटा हम क्या यूज करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ कोस थीटा, स्केयरिंग बोथ साइड। L E माइनस आर कोस थीटा द होल स्क्वायर, E स्क्वायर R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो L स्क्वायर E स्क्वायर
प्लस आर स्केयर कोस स्केयर थीटा माइनस 2LER कोस थीटा इक्वल टू E स्केयर आर स्केयर साइन स्केयर थीटा 1 माइनस cos square theta. Okay, so we have L square E square minus, okay, plus R square माइनस प्लस हो गया बेटा, इस तरफ आ गया E square R square कॉमन cos square theta. Okay, माइनस 2LER cos theta minus E square R square equal to G. Then we find cos theta from equation 1 and put in third. So from 1 की वैल्यू आ गई बेटा cos theta E cos theta equal to 1 minus L upon R. So cos theta is equal to R minus L upon ER. Put in this one, put in third. L square E square plus R square common होता है 1 plus E square. Okay. Cos square theta R minus L the whole square upon E square R square. Okay. Minus 2LER cos theta R minus L upon ER minus E square R square equal to G. Okay. Then in both बेटा देखो L square E square common L square minus R square. Okay, plus 1 plus E square upon E square R minus L the whole square. बेटा यहाँ पे L minus R है, so write L minus R the whole square plus 2L L minus R equal to G. So L minus R common आ गया बेटा, L minus R common from this equation. So we have E the 4 upon E square बेटा, E the 4 L plus R plus 1 plus E square L minus R, okay, plus 2L E square equal to G. Okay beta, so this one 2L E square equal to G. Then beta L minus R में कॉमन करेंगे, so this one equal to 0. If L equal to R, then latest rectum हो गया बेटा, अपने की फाइंड करना है FQ. So is E the power 4 L plus R into E the power 4 plus 1 plus E square into L minus 1 minus 1 plus E square into R plus 2L E square equal to 0. बेटा R टर्म्स इक्वेट कर लो, E the 4 minus 1 minus E square into R is equal to minus L common 2E square 1 plus E square plus E the power 4. So R is equal to L into 1 plus 3E square plus E the 4 upon minus ना multiply 1 plus E square minus E the 4. बेटा ये अपने की करना सी प्रूफ है, आर की आ गया बेटा, क्योंकि एक लेंथ बेटा 2 पॉइंट्स मीट करे, एक लेटेस्ट रेक्टम
एक बेटा एफ क्यू, लेटस रेक्टम एल इक्वल टू आर, देन आर इक्वल टू दिस वन इज a length of एफ क्यू. Okay, second example बेटा, if the normal at alpha beta gamma on the parabola L upon R equal to 1 minus cos theta meet in the point R dash phi, prove that alpha plus beta plus gamma is equal to minus pi is equal to 2 phi. Okay beta. So first beta अपनी equation given है L upon R 1 minus cos theta. Equation of normal at theta 1 is की सी बेटा L E1 है पुत्र sin theta 1 upon R 1 minus cos theta 1 equal to sin theta minus sin theta minus theta 1. This one meet कितने मीट कर रहे हैं बेटा, मीट किस पॉइंट पे R dash phi. So L sin theta 1 R dash 1 minus cos theta 1 is equal to sin phi minus sin phi minus theta 1. Okay बेटा, we write this one phi minus कितना आ गया बेटा theta 1. So sin phi minus बेटा रिजल्ट की सी पुत्र sin A cos B minus cos A sin B, sin phi cos theta 1 minus cos phi sin theta 1. So we write so कितना आ गया L sin theta 1 upon R dash 1 minus cos theta 1. So sin phi, okay, 1 minus cos theta 1 plus cos phi sin theta 1. बेटा you know sin theta 2 sin theta by 2 cos theta by 2 sin square theta 1 by 2 sin phi बेटा 1 minus cos theta in the form of tan 1 minus tan square theta 1 by 2 1 plus tan square theta 1 by 2 plus cos phi sin phi in the form of tan 2 tan theta 1 by 2 1 plus tan square theta 1 by 2. Okay, this. So L upon R dash cos 1 upon tan theta 1 by 2, okay, is equal to sin phi 1 plus tan, ठीक है बेटा 1 plus tan, tan square cancel, 1 plus tan square theta 1 by 2 minus 1 plus tan square theta 1 by 2 upon 1 plus tan square theta 1 by 2. Okay बेटा, plus cos phi, so 2 tan theta 1 by 2 1 plus tan square theta 1 by 2. This. Okay बेटा, टेक tan theta 1 by 2 ਨੂੰ p ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਜੋ tan theta 1 by 2 ਜੀ ਰੱਖੋ ਬੇਟਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ. ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ L upon R dash 1 upon tan theta 1 by 2
is equal to sine phi 2 tan square theta 1 by 2 1 plus tan square theta 1 by 2 okay plus 2 cos phi tan theta 1 by 2 upon 1 plus tan square theta 1 by 2 okay beta. So LCM beta L upon R dash okay L into 1 plus tan square theta 1 by 2 equal to 2 R dash sin phi ठीक है 2 R dash sin phi tan cube theta 1 by 2 plus 2 R dash cos phi tan square theta 1 by 2. So we write the equation क्या आ गया बेटा 2 R dash sin phi tan cube theta 1 by 2 tan square वाले cos phi बेटा इक्वेट कर लो 2R cos phi minus L tan square theta 1 by 2 okay plus 0 tan theta 1 by 2 minus L equal to 0. So equation cubic च आ गई बेटा. So we know alpha beta gamma 3 normals. अपन normal किस पॉइंट्स पे ड्रा किया बेटा थीटा 1. So we find 3 roots. 3 roots की आ गई tan alpha by 2, tan beta by 2, tan gamma by 2. Let 3 roots. Okay. Is there 3 roots? You know beta if equation ax cube plus bx square plus cx plus d alpha beta gamma is the roots है the sum of roots is equal to minus b upon a sum of the product of two roots taken two at a time alpha gamma c upon a product of three roots minus d upon a. So first s1 means sum of इसमें s1 denote कर रहा है बेटा इसमें s2 this one denote s3 s1 sum of three roots minus b upon a minus 2 r dash cos phi minus L upon 2 r dash sin phi. S2 sum of the product of two roots this one c 0 beta and S3 product of three roots minus minus plus L upon 2 r dash sin phi. So बेटा नेक्स्ट हमारे पास एक वन रिजल्ट है बेटा इफ tan गिवन है बेटा इक्वेशन वी नो दैट tan theta 1 by 2 sorry alpha by 2 3 roots alpha by 2 plus beta by 2 gamma by 2 बेटा tan a plus b plus c का रिजल्ट है S1 minus S3 upon 1 minus S2 बेटा 4 वास्ते 5 वास्ते अगर रिजल्ट है बेटा पर अपन of 3 roots हैं इसके we use this S1 minus S3 upon 1 minus S2 S1 okay minus 2 R dash minus cos phi plus L upon 2 R dash sin phi minus S3 L upon 2 R dash sin phi upon 1 minus G S2 okay so this one L cancel beta minus cot phi okay you write tan pi by 2 plus phi beta okay tan pi by 2 plus phi so alpha by 2 plus beta by 2 plus gamma by 2 pi by 2 plus phi so alpha plus beta plus gamma pi plus 2 phi so write this one we find the result. So beta is the examples of normal to the conic. So thank you very much.